want to ask you that how can I tell my daily schedule if somebody asks me? Because every time I find difficulties that how can I express myself. Of course. So there are lots of ways to talk about our routine. तो गाइस कुछ इस तरह से मैं जब भी फ्री होता हूं ना फॉरेनर्स के साथ बात कर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करता हूं। अब ये वाली कॉन्वर्सेशन तो पूरी है इस वीडियो में, एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि इसे सुनकर आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता चलेगा कि बेसिक इंग्लिश में बहुत सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए कैसे आप फॉरेनर्स से बात कर सकते हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अब अगर आप मेरी तरह ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको वो तरीका बताता हूं। वेल, इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए मैंने यूज किया है Cambly एप्लीकेशन। Cambly इंडिया का इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया में मौजूद अलग अलग कंट्री के टीचर्स के साथ वन ऑन वन फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं। अब ये टीचर्स कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। और हाँ, Cambly पर टीचर्स 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं, यानी दिन हो या रात, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो मोबाइल में Cambly खोला और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए किसी भी कंट्री के टीचर्स के साथ। अब Cambly पर ये जो टीचर्स है ना, ये वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, जो आपके वीक पॉइंट को देखते हुए आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको जज नहीं करेंगे कभी भी, बल्कि आपको सही रास्ते के लिए गाइड करेंगे। और हाँ, Cambly पर इंग्लिश सीखने के लिए आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश सीखनी किस वजह से है। आईएलटीएस जैसा कोई एग्जाम देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखनी है, बिजनेस के लिए सीखनी है, लोगों पे ऐसे ही भरम जमाने के लिए सीखनी है, या बस ट्रैवलिंग के लिए सीखनी है। मतलब आपका कोई भी मोटिव हो, कोई भी टारगेट हो, Cambly के जरिए आप एक्सेंट भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आपके लिए एक फायदे का सौदा और बता देता हूं कि अगर आप Cambly सीरियसली यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके पैक पर मिल सकता है 22% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए Cambly एप्लीकेशन और वहां पर किसी भी 3 महीने वाले प्लान पर यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड 22SSC। बिल्कुल यही स्पेलिंग होनी चाहिए, नीचे लिखी हुई है 22SSC से चूज करते ही आपको इस प्लान पर पूरे 22% यानी कि 22% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए, खैर ये तो हुई आपके फायदे की बात। अब शुरू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। अब इसे एंड तक जरूर सुनिएगा, एंजॉय कीजिए। Hello. Hello. Hi, how are you? I am well. How are you? I'm well. I'm good. I'm fine. Thank you so much for asking. And what's your name? My name is Sartaz, and I'm from India, New Delhi. I hope that you have heard. Yes. Yes. I had a professor from university who lived there. Okay, great. So, are you from UK or US? I'm from the United States. I am located in Indiana. Oh, that's great. Okay. America, great. Actually, I had some free time, so that's why I thought that I will do practice on Cambly. And really, it's a very good application. And I always get too many good teachers. So I want to ask you that how can I tell my daily schedule if somebody asks me? Because every time I find difficulties that how can I express myself? How can I tell my daily routine? You know, I add so many extra things that I go to school, then I go to this and that. So according to you, can you please suggest me what should I do? What should I tell? Of course. So there are lots of ways to talk about our routine and the different things that we do through the day. So you can usually say, yeah, I went to school today. It was okay. Or we like to give details about the experience. Okay. Okay, that's the thing I'll do. Thank you so much. But you know, especially in interviews, the people ask that please tell us about your daily schedule, what you do from morning to evening. So that's why I was asking. By the way, how's the weather in US? Right now, there is a very large storm all through the United States. My God. Okay. It's a very large winter storm that is affecting every state a little bit differently. I think all the people are preparing for New Year in US. Yeah, it's going to be New Year's, Christmas time, all of it. Lots of holidays happening. So what do you do on the occasion of Christmas and a New Year? So for Christmas, I usually enjoy going around and visiting with family. It's actually my first time back in the United States. I was in Spain for 2 years. Okay. And so for New Year's, I like to either go to a party or go to an event so that we can all celebrate together. Same thing we do at the occasion of New Year. There are so many places where people celebrate New Year and they go for a party, they go for a night out, and they keep wandering here and there. That's awesome. What is your favorite New Year's tradition?
Well, I love to go out with my friends, and of course, we celebrate a lot. And we go some special point, like it can be a party hub, or it can be a kind of a restaurant or something. And we all do lots of fun, and we play music, and we wait for 12 o'clock. Then after that, we start a party. Yeah, I completely agree. It's always nice to bring in the new year around the people that you care about the most. According to you, social media is good for today's youth, or it's bad? I think that it is a combination of things. So there are studies that talk about the effects of social media on mental health, and I think that that's an important thing for people to be aware of. But I think that it's also important that with social media, we can all stay interconnected, Right. and we can learn things. The internet is a wonderful place with lots of resources like Cambly and YouTube. Yeah. Right. In fact, they even have phrases like YouTube University to describe how people learn so many things from it. I totally agree with you. You are absolutely right. But I think that applications like Cambly are really perfect, and people can learn from their homes. By the way, I think the time is no more, and we should stop this conversation. Thank you, teacher. You're really expert in your field, and I had a very good conversation with you. I enjoyed. Thank you. Thank you. It was wonderful meeting you today, and I hope that you have a great weekend. Thanks. Thanks a lot. Bye bye. You're welcome. Bye.